He ended by saying, the BJP spokesperson, do you want Mangal Sutras to be taken? We're talking about the Congress manifesto and given to Rohingyas. I, on this show, will shave my hair right now if you can show where it's written in the Congress manifesto, because I've been involved in it. Show where it's written. I will publicly apologize and leave. Where is it written? And if it's not written, does it behove the Prime Minister to say, Navika ji, you and I can disagree on a lot of things, but you're a woman. Is the Congress manifesto saying we will take women's Mangal Sutra and give it? Does it behove the Prime Minister of the greatest? It does talk about redistribution. You never interrupted him. Please, it does talk about redistribution. I will come to it. I will come to it. Please, give me the courtesy of answering. You are a woman, someone I respect. Does it behove the Prime Minister of the greatest country in the world, the most powerful man, to say this about women, that we'll come and we'll take your Mangal Sutra and give it to Rohingyas? If Rohingyas today are there in this country, after 10 years of the most powerful man in the universe as Prime Minister, and his Tushar Mehta in Supreme Court says, these are not Ghuspetias, but they are actually United Nations human rights refugees who we've given cards to, and they are taking care of it. Whose fault is it? Is it the Congress's fault or Mr. Modi's fault? I hope I've answered that question. Let's come to the second bill. I'm involved in this manifesto. Where does the Congress say we'll remove the nuclear bomb? These words were spoken out here. How come that's not stopped? Where does the Congress manifesto, ma'am, say that the nuclear weapon will be removed? Mrs. Indira Gandhi got the nuclear weapon in. Third, where does the Congress say Sharia laws will be implemented? It says reform of personal laws. Now, let's come to the specific question you asked about redistribution. It's a very important question that you asked. Was the Prime Minister telling we'll take people's houses away when he said when money comes from Swiss banks, sabke khate mein 15 lakh aaya, Amit Shah ji later said jumla. Was that? What is redistribution? Our directive principles aim for India to be an equal country, and the manifesto then clarifies, again, I'm involved in this, that we will aim to get people into the same economic strata. How is that wrong? Where does this manifesto say that you have 2 houses, Navika ji, or Shehzad has 2 houses, or I have, one of our houses will be taken? If you can show this, Navika ji, on this show, I will not just apologize, I will never on a show defend. Where are this written here? My friend, you know, you should look at your manifesto. No, where are these words written? These words written. Can I? Please, ma'am. You should take your manifesto, and in the manifesto release in Telangana, here, we are talking about the 1 minute, can I complete? Don't get Telangana. Manifesto release in Telangana, did Rahul Gandhi say this on stage? Yes or no? Yes, he spoke about redistribution. Where does he say 2 houses will be taken and given to one? ऐसा है, तहसीन जी ने बड़ी बातें की. उन्होंने कहा कि मैं अपना सिर मुंडवा दूंगा. मुझे लगता है रेजर की कंपनियां जो है एक स्पॉन्सरशिप दे दे. मैं अभी इनके सिर मुंडवाने वाली बातें करता हूं. सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए. आपने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए और बोला कि मैं सिर मुंडवा दूंगा. अब देखिए, तहसीन पूनावाला ने कहा कि तुषार मेहता ने कहा है कि ये ह्यूमन राइट्स का विषय है रोहिंग्या के विषय में. सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है कि रोहिंग्या माइग्रेंट्स पोज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी. ये ऑफिशियल स्टैंड है. पर तहसीन ने कितना झूठ बोल दिया आपके सामने. अब बीच में मत डिस्टर्ब कीजिए. उन्होंने कहा हमने शरिया की वकालत कहां की है? पर्सनल लॉ ही लिखी है, उसमें शरिया थोड़ी लिखने की आपकी हिम्मत है. पर आप मुझे बता दीजिए कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड. चलिए, कांग्रेस तो ऑफिशियली नहीं है, यहाँ पे आरजेडी या समाजवादी पार्टी बताते यूसीसी के साथ है. 300 या उन्होंने यूसीसी का विरोध किया है. दूसरी बात, आज यूसीसी का विरोध कांग्रेस ऑफिशियली कर रही है. तीसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को खत्म किया तो कांग्रेस ने उसके समर्थन में बोला नहीं, 3 तलाक का कानून बना, उसका विरोध किया. क्या रिफॉर्म करना चाहते हैं आप फिर से 3 तलाक लाना चाहते हैं? अगर ऐसा नहीं, ऑफिशियल कांग्रेस इसका जवाब दे. चौथी बात मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने अभी बात की कि न्यूक्लियर बॉम्ब का कहां लिखा है. लेफ्ट का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए. मैंने इंडिया अलायंस के मैनिफेस्टो की बात की कि 1 सेट ऑफ मैनिफेस्टो से कि न्यूक्लियर बॉम्ब खत्म कर देंगे, हम लोग जो है क्वाड से निकल जाएंगे. और अपना मैनिफेस्टो क्या कह रहा है मैंने वो बताया. अब ये तीसरी बात पे इनका सिर मुंडवाना पड़ेगा. और चौथी बात, मैं आज एक चैलेंज छोड़कर जाना चाहता हूं. आपको पता है सबसे ज्यादा जमीन किसके पास होती है आफ्टर रेलवेज एंड डिफेंस? वक्फ. आज मैं समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि क्या इस रीडिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला में वक्फ की जमीन भी रीडिस्ट्रीब्यूट की जाएगी?